the next part, that is long trains. So first scenario was straight line motion. Second scenario was circular motion. Third scenario is long trains. How do we solve for trains? तो trains तो हमने पहले भी solve किया है जब हम normal सीख रहे थे. This is about long trains. What do you mean by long trains? Long trains are basically the trains which have their own length. The trains which have their own length are called as long trains. So what happens is that length gets added in the distance. For example, they say a train 200 meter long is 1000 meter away from a pole. So there's a pole. Okay, imagine it rightfully. Okay, there's a pole and there's a train. This train is 1000 meter away from the pole, and the train itself is 200 meter long, and it is traveling with 100 meter per second. How much time will it need to cross the pole? Cross the pole का मतलब क्या है कि train अगर ये straight path था, cross the pole का मतलब क्या है कि if this is the before, after crossing the train is going to be here. Yes or no? After crossing the train is going to be here. ये उसका इंजन है, यहाँ पे ये उसका इंजन है. Yes or no? ऐसी होगी ना ट्रेन. So if we calculate, we'll realize how much distance has this train covered. Engine to engine distance निकालो. How much it has covered? This is 1000 meter. Yes, very good. And this is the 200. So total distance is 1200. So this is what the length of the train changes the distance. So speed here is 10 meter per 100 meter per second only. एक ही body है. Distance covered is 1200 meter. So time is how much time it required to cross? Distance by speed, 12. How much time will it require to cross the pole? 12 seconds. Fair, very, very good. Let's do second question. क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है कि a train which is 200 meter long is 1000 meter away from a 300 meter long tunnel. So now again, there is a tunnel, right? And this is a train which is 200 meter long, and it is 1000 meter away, जैसे पहले था, but this time it's not a pole, it is a tunnel. Now if is हमेशा before after draw करना है. This is your train, ठीक है? Train का engine है वो. Train is moving with 100 meter per second. Now ये before. After crossing, what happens? The train is here, right? After crossing, this is where the train will be. This is when we will say crossed. So if we now calculate distance traveled by train, engine to engine distance करेंगे ना, it's 1000 meter plus 300 meter, 300 meter of the pole and 200 meter of the train's length. So what's the total distance now? Speed तो उतनी है. Total distance is 1500. So time is 15 seconds. How much seconds will be required to cross this tunnel? 15 seconds. Do you understand? तो tunnel की भी length add हो गई. Fair? Did you understand this? Yeah? Good. So now we move ahead. Okay, अभी long trains में relative speed. Long trains में relative speed. A train that is, again, say देखो, same, a train that is 200 meter long is away from a man walking in the same direction at 10 meter per second. So there is a man who is going ahead with 10 meter per second, and there is a train 200 meter long, which is 1000 meter away, traveling at 10 meter per second, 100 meter per second. Okay. In how much time will the train cross the man? The man is not on the patri, man is बाजू में. तो कैसे होगा? There are two bodies which are moving with respect to one another. तो आएगा relative speed. जैसे ही two bodies are moving with respect to one another, there is a relative speed. Speed क्या होगी? But same direction में क्या होता है? Straight line motion है. Same direction में क्या होता है? Subtract होता है. 100 minus 10. See, the moment you feel like you don't know add हो रहा है कि subtract हो रहा है, imagine if the guy was here standing, train would have crossed him in certain time. But the moment man is also moving ahead, the train is taking longer. Why longer? But the speed has reduced. So, okay, what is the distance? Distance again before after draw करना है. कि before the train is here, after crossing the train will be here. How much distance? 1000 meter plus 200 meter. The distance travel is 1200 meter, right? So what is the time? Time is distance by speed. 3 3s are 40 by 3. 40 by 3 is how much? 13.33, right? So 13.33 seconds will be required for the train to cross the man. Speed कैसे निकाली? Distance कैसे निकाला? और time. पूरा आसान है.
डायरेक्शन के हिसाब से स्पीड निकालते हो, बिफोर आफ्टर के हिसाब से डिस्टेंस निकालते हो, एवरी टाइम। समझ गए? अब it was a train and a man. Man did not have any dimensions. Let's say there are two trains. Both the trains have their own lengths. So what happens is कि a train A, which is 200 meters long, is 1000 meter away from another train B, which is 300 meter long. They are moving in the same direction, where train A is traveling same direction with 50 meter per second, and A is traveling with 100 meter per second. How much time will train A take to overtake train B? Again, speed कैसे आएगी? Same direction subtract होती है, तो 50 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन से स्पीड निकल गई. डिस्टेंस कितना होगा बिफोर आफ्टर इमेज से? बिफोर ट्रेन इज हियर, आफ्टर क्रॉसिंग द ट्रेन विल बी हियर. See, we take train B stationary. Why do we B will be there only? Why? Because हमने B माइनस कर दिया ना, 100 को 50 बना लिया ना हमने, तो इसकी स्पीड हमने ले ली ना इससे, तो अब ये स्टेशनरी हो गया. So if I now calculate, I'll be like, okay, engine to engine, how much distance has been covered? 1000 plus 300 plus 200, that is 1500. So 1500 is the distance. So what is time? Distance by 30. Are you getting it? Keep giving me thumbs ups so that I know you're getting it. Yeah, I'm not moving fast. No, you're able to make complete sense of this, right? Good. Very good. So now you have long trains, relative motion, another thing. ठीक है? अब same direction तो शायद opposite direction लिया होगा मैंने. A train A, which is 200 meter long, is 1000 meter away from another train B, which is 300 meter long, moving towards it with 50 meter per second. If train A is traveling with 100 meter per second, how much time do they have to apply brakes before their collision? वो बिलेंगे कितने टाइम पे? धड़ाम हो जाएगा. कितना टाइम है उनके पास? अगेन सेम स्पीड ऐड होगा इस केस में, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन. डिस्टेंस सेम, वैसे कैलकुलेट करना है. दिस टू दिस 1000, 300, 200. Engine to engine distance. The distance is 1500 meter. How much time do they have? नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस 1000 ही आएगा, बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग हैपनिंग, देयर इज मीटिंग हैपनिंग. हाँ, आई एम सॉरी, दिस इज स्टेशनरी. जब सॉरी, हाँ ये गलत है, क्रॉस नहीं कर रहा है ना वो, दे आर कोलाइडिंग. कोलाइडिंग मतलब बिफोर आफ्टर क्या होगा? व्हाट इज बिफोर आफ्टर ऑफ कोलाइडिंग? की पहले इधर है स्टार्टिंग में, दिस इज वेयर इट इज एट, एंड देन विल धड़ाम होगा तब इधर आ जाएगा, राइट? सो दिस टू दिस डिस्टेंस इज 1000 ओनली, है ना? 1000 only the distances. So distance is 1000 meters. So time is distance by 5 3s are 20 by 3. 20 by 3 is how much? 6.66 seconds. It is all about how intelligently do you know that you need to find the ठीक है. तो इस तरीके से कोलिजन हमने डिटरमाइन किया कि बी को हमने स्टेशनरी लगा और बोला ए कितना डिस्टेंस ए ने कवर किया धड़ाम करने से पहले 1000. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड इट. चलो नेक्स्ट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स. सो हमने 3 सिनेरियो सीख लिए. देखो इतने पटापट और इतने इजी, जो सबको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट वी रियलाइज कि डूड दिस इज प्रीटी इजी. सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोज, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स. तो अब हम ये करेंगे और उसके बाद आएगा एस्केलेटर. दोनों सिमिलर है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड एस्केलेटर. सो हाउ इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स? बोट्स एंड स्ट्रीम्स का मतलब ये होता है कि देयर इज अ नदी और उसके ऊपर बोट चल रही है. व्हाट इज अपस्ट्रीम? देखो बेस असम्पशन इज एक हिल है, यूजुअली हिल्स में ही नदी बहती है ना, वहीं से स्टार्ट होती है. तो पानी ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? नीचे जाता है. पानी ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? डाउन ओनली, इट फ्लोज ना, ग्रेविटी. तो इट कम्स डाउन. सो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है? द downstream means stream to goes down and you are also going downstream, matlab you are going in the same direction. The boat and the stream are in same direction. Upstream matlab kya? Stream जा रही है और तुम up climb कर रहे हो उसके. Stream जा रही है तुम up climb कर रहे हो. तो basically upstream basically means that if the water is going in certain direction, speed of water, I take my boat in this direction, opposite. Upstream is opposite.
And downstream is the stream is going down and I am going with it. Speed of boat and speed of stream. ये होता है upstream and downstream. ठीक है, when the boat is going upstream, मतलब it is opposite to the current or whatever river, SW S of river. And when downstream, I'm going in the same direction. The boat, I'm taking the same direction as the river. तो अभी इसमें speeds कैसे होगी? Relative speed. Again imagine करो, if river stationary होता, तो boat अपनी जा रही होती, but river opposite direction में है, तो बोट को पीछे खींचेगा ना, कि बोट को जाने देगा नहीं, पीछे खींचेगा, अपने साथ पीछे खींचेगा. तो इसका मतलब देयर विल बी अ रेजिस्टेंस वर्सेस रिवर जा रही है, बोट नहीं, बोट जा रही है. पानी फ्लो होने लगता है इस डायरेक्शन, तो बोट को अपने साथ खींचेगा, तो बोट को इजियर होगा, बोट फास्टर पहुंचेगी, क्योंकि पानी भी हेल्प कर रहा है उसको, राइट. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट विल बी राइट. सो एसबी बेसिकली स्टैंड्स फॉर बोट की एब्सोल्यूट स्पीड, boat's speed in still water. Let's say if the stream was not moving, boat की अपनी speed जिससे वो चला रहा है captain, but because of the river, now boat, this is boat का resultant speed. Because of the motion of the river, the boat का speed increases or decreases, है ना. तो boat की अपनी speed होती है और उसको river से अलग मिलती है या resistance मिलता है. So this is what upstream and downstream signifies. Do you understand it? Yeah. So considering that, let us solve boats and stream question. A boat goes from point A to point B downstream with 20 km per hour. अगर वो point A to point B जा रही है और ये downstream है, downstream मतलब the river is clearly flowing in this direction. तो downstream का speed कितना होता है? Downstream का speed कितना होता है? Addition होता है ना, speed of boat plus speed of river, which is 20 km per hour. And upstream मतलब क्या होगा कि ऑपोजिट जा रहे हो, मतलब तुम रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, रिवर तुम्हें पीछे खींचेगी. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. कैसे होगा? ये कट हो जाएगा. 2 times of speed of boat is equal to 32. तो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 16 km per hour. सिंपल सॉल्व हो गया. स्पीड ऑफ रिवर आया 4 km per hour. दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. डू वी अंडरस्टैंड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फंडा यहाँ पे? यस. चलो गुड. Now we have next question, right? Let us understand this question also. So it basically says, a boatman in Varanasi takes tourists from Manikarnika Ghat to Assi Ghat and then back to Manikarnika Ghat. क्या होता है? एक मणिकर्णिका घाट है, वहां से तुम अस्सी घाट जाते हो इस डायरेक्शन, एंड देन अस्सी घाट से मणिकर्णिका घाट फिर से जाते हो. ठीक है. The distance between the two ghats is 10 km. ठीक है, 10 km distance है. Times per distance question, classic question, what do? We always draw. ठीक है. एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km. बस बोट की अपनी स्पीड, राइट. स्टिल वाटर मतलब बोट की अपनी स्पीड, नॉट इन द रिवर, नॉट द रिजल्टेंट स्पीड. इफ द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोथ दिस जर्नी इज 3:1, मतलब यहाँ पे 3x टाइम लगता है और यहाँ पे 1x टाइम लगता है. तो मतलब रिवर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी? रिवर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी? रिवर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? ऐसा जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब रिवर तो इस डायरेक्शन में होगी ना. तुम रिवर के ऑपोजिट जा रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है, और यहाँ पे रिवर के साथ साथ जा रहे हो, इसलिए तुम्हें कम टाइम लग रहा है. तो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, राइट. Accordingly, what do you understand? There are two motions happening. Again, there is no relative speed here. Why? Sorry, relative speed here with respect to river and this thing, but we have two motions here, upstream and downstream, right? We have two motions, upstream and downstream. So first, when it goes from Manikarnika Ghat to Assi Ghat, it is clearly a upstream motion because you are going opposite to the direction of the stream. You are taking more time because the speed has reduced. So speed, distance, time. This is what we have learned to note, right? From this to this. Speed, distance, time, right? When the distance is constant, when the distance is constant, what happens is S1 by S2 is T2 by T1, right? S1 by S2 is equal to T2 by T1. 30 into 3 SR is 10 plus SR. So we have 4 SR is equal to 20. So SR is equal to 5 km per hour. So what is the speed of the river? This.
ठीक है, right? So this is 5 kilometer per hour. This is how we got our answer. ठीक है, so okay then. अब आ गया हमारा एस्केलेटर का सवाल. एस्केलेटर मतलब वी नो वी गो इन मॉल्स वी सी एस्केलेटर्स ऑल द टाइम. सो यहाँ पे भी क्या होता है, व्हाट इज द फंडामेंटल दैट हैपेंस हियर इन एस्केलेटर? इन एस्केलेटर आल्सो बेसिकली you have an escalator that and you go up it or down. So if the escalator is moving and you go up the escalator, right? So you are a person who is trying to climb up while the escalator is going down. While you go down the escalator, matlab the escalator is also going down and you are also going down with it. So when the escalator is already going down and you climb up with it, go to the mall next time and imagine you are going to take more time, right? If it was stationary stairs, तुम चढ़ चढ़ के ऊपर चले जाते, but escalator नीचे नीचे आ रहा है, तुम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, देखो ऐसे से तुम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, escalator नीचे आ रहा है, तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है ना. Whatever your speed was as a man, and what effectively your speed will reduce, escalator will pull you down, right? And when the escalator is going down, you go with the escalator, same direction. What's gonna happen? Effectively, at the end of it, this is your speed only, but this was your speed SM on stationary stairs. कि escalator move नहीं कर रहा है तो मैं इतने टाइम में चढ़ जाता हूँ. But escalator की motion के कारण मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है because speed reduce है. यहाँ पे escalator की motion के कारण मैं जल्दी पहुंच पा रहा हूँ because escalator is helping me. So this is the escalator वाला situation. Same as river and going with the river and going up the river. Same thing is. ठीक है, चलो last bit, we are in the last bit of the class. हमारे last 2-3 सवाल बचे हैं बस और हमारा scenarios largely finished है. तो क्या होता है escalator में बताओ? A man walks up a stationary escalator in 60 seconds and with the escalator moving he takes 40 seconds. A man walks a stationary escalator मतलब वो खुद की स्पीड हो गई ना उसकी, अकेले की स्पीड, अकेले की स्पीड, and with the escalator moving he takes 40 seconds. मतलब obviously this is when escalator is helping him, इसीलिए 40 seconds आया. Distance will be the same, distance will be the same. कैसे करते हैं calculate? Speed, distance, time. So alone the speed of man is there, whatever the distance, the time is 60 seconds. And second scenario में 40 seconds ले रहा है, मतलब कम time ले रहा है, मतलब definitely they both are moving together. 40 seconds. Right? तो अभी तुमको ये अज्यूम करना है, इसमें तुमको अभी फाइंड आउट करना है कि अगर वो सिर्फ एस्केलेटर से अकेले जाता, फाइंड टाइम टेकन बाय एस्केलेटर अलोन, इफ द एस्केलेटर वाज नॉट मूविंग एट ऑल, हाउ मच टाइम वुड हैव द एस्केलेटर इटसेल्फ टेकन? ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय एस्केलेटर अलोन. सो बेसिकली व्हाट डू वी डू इज, द वे टू सॉल्व दिस इज दैट we basically can be like, okay, the distance is constant, so sm by t2 by t1, right? So what does this give? कि let us assume कि ये 4 मीटर पर सेकेंड है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड है. अज्यूम कर सकती हूँ मैं ऐसा, अगर ये 4/6 आ रहा है तो लेट मी अज्यूम कि दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड देन दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड. इफ आई अज्यूम दिस, व्हाट हैपेंस? आई गेट सम डिस्टेंस. माय डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 4 into टाइम 60, तो 240 मीटर का वो डिस्टेंस है. Now they are asking me if the escalator was going alone. Escalator was going alone with 2 meter per second. Distance is 240. So time would be what? 120 seconds. Escalator अकेले को कितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में? 120 seconds. समझा कैसे किया मैंने? रिलेटिव स्पीड में भी फिर सिनेरियोस. ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड. सेकेंड वन, ट्राई डूइंग दिस बाय योरसेल्फ. Yes, where are we at? First case, you are walking up the escalator, मतलब escalator का speed minus हो रहा है distance and time, right? Second case, the man is walking down with the same speed, तो ये same distance d cover हो रहा है in 40 seconds. Same distance constant, so you're like s1 was minus, sorry, s1 by s2 is equal to t2 by t1. ठीक है, ओके.
So let us solve this, or this is 2 by 3. So we have sm minus se divided by sm plus se is equal to 2 by 3 या 4 by 6 लो, ज्यादा बेटर तुम कैलकुलेट कर पाओगे. कैसे आएगा ये? 5 माइनस 1 आएगा, अगर ये 5 प्लस 1 आएगा तो मैं sm को 5 और se को 1 ले लूं. ले सकती हूँ मैं, अज्यूम कर सकती हूँ. तो अगर ये 1 है, अगर ये 1 है और ये 5 है, और उसके हिसाब से ये 4 है अगर, तो डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड इंटू टाइम 240 सेकेंड्स, है ना. और मुझे थर्ड सिनेरियो पूछा है उन्होंने कि अगर एस्केलेटर अकेले जाता तो एस्केलेटर की स्पीड तो मैंने 1 मीटर पर सेकंड ली है और डिस्टेंस 240 मीटर्स है, सॉरी सेकंड मीटर्स है, राइट. तो टाइम कितना लगेगा? 240 सेकेंड्स ओनली. अंडरस्टूड? हाउ डिड वी सॉल्व दिस? सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास. A man walks up a moving escalator in 48 seconds. If the escalator speed is increased by 25%, he takes 40 seconds. If the escalator speed is increased, find the time taken by a man to walk up a stationary escalator. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है. फर्स्ट लेट अस इमेजिन कि किस डायरेक्शन में हमारा मैन जा रहा है. और मैन वॉक मूव्स अ मूविंग एस्केलेटर, उसको 48 सेकंड्स लगता है. जब तुम एस्केलेटर की स्पीड बढ़ा दो तो उसको कम टाइम लग रहा है, मतलब वो एस्केलेटर के साथ ही मूव हो रहा होगा. कैन यू हियर मी? यस, आ रहा है ना. हाँ, तो अगर एस्केलेटर की स्पीड बढ़ा दी तो ये और जल्दी पहुंच रहा है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट. तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, फर्स्ट केस में क्या है? द मैन एंड द एस्केलेटर आर मूविंग अहेड द सेम डिस्टेंस एंड टेकिंग 48 सेकेंड्स. नाउ इट्स द मैन plus 1.25 times escalator speed. 25% increase मतलब 1.25 times is happening in 40 seconds. So if we look by it, sm plus se plus 0.25 se this was. Fair? Fair? Now I have to find the time taken by man. So let's say we are going to assume this as s, some speed s. This speed is definitely s plus 0.25 se. Correct? Find the time taken by the man to walk up a stationary escalator. तुम्हें sm निकालना है अभी. ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? We will have to do this together, मतलब साथ में जैसे हम कर रहे थे. S1 by S2 is equal to T2 by T1, right? 4 10s are 4 12s are 2 5s are, मतलब 8 का टेबल बोलना चाहिए था वैसे, 6 जा. ठीक है, तो S की वैल्यू तो 5 आ गई. S प्लस 0.25 SE की वैल्यू 6 आ गई और S की वैल्यू 5 है, मतलब 0.25 SE is equal to 1, right? तो SE is equal to 1 by 0.25, that is 4. तो 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है SE. और तुम्हारा S टोटल कितना है? 5. और S इटसेल्फ की वैल्यू कितनी है? SM प्लस SE विच इज 5. और SE कितना था? 4. तो मतलब SM की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ द मैन इज 1 मीटर पर सेकेंड. So speed of the man is 1 meter per second. You have to find the time taken by the man to walk up the stationary escalator. Distance कितना है escalator का वो निकाल लो. If this is 5 meter per second, this is 5 and this is 48. Or let's say this is 6. This was 6, right? This was 6 and this is 40. Collectively कितना टाइम लग रहा है? 240 मीटर का डिस्टेंस लग रहा है, राइट. मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया, राइट. 240 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है मैन की, तो उसको कितना लगेगा? 240 सेकेंड. दिस इज योर फाइनल आंसर. Do you get it? Yes. So this is how you're supposed to solve these questions. So these were certain bunch of scenarios that we took, and we realized that at the end, the direction determines if the speeds will be added or subtracted. Distance is designed by कि initial to end दोनों मतलब मिलके कितना distance cover किया है. And the time is then time speed is equal to distance upon time. Escalator में boats and streams में थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं, because usually straight line motion में, long trains में, circular motion में क्या था कि both the bodies were moving with respect to one another. The distance was covered by both of them together this way. But in an escalator or in a boat, they both are together moving. Right? ऐसे escalator ऐसे जा रहा है, boat ऐसे जा रही है, या escalator ऐसे जा रहा है, man ऐसे जा रहा है, या boat ऐसे जा रही है, escalator opposite या same.
दे आर मूविंग टुगेदर, बट इन सर्कुलर मोशन क्या था, ये दो लोग अलग अलग मूव कर रहे थे, राइट? तो वो एक डिफरेंस है, बट एट द सेम टाइम द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि इफ वन पर्सन वाज स्टेशनरी हाउ मच टाइम वुड हैव बीन टेकन, एंड दूसरे पर्सन की मोशन के कारण लेस टाइम, तो स्पीड इज एडिंग, है ना? अगर बोट जा रही होती कितने टाइम में, रिवर के स्पीड के कारण बोट फास्ट जा रही है तो टाइम ऐड हो रहा है, बोट अगर स्लो जा रही है बिकॉज ये पीछे पीछे खींच रहा है तो माइनस होगा। तो ये फंडा क्लियर रहेगा कि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा स्पीड, डिस्टेंस अकॉर्डिंगली एंड देन टाइम अकॉर्डिंगली, और फिर ऐसे करके जुगाड़ जुगाड़ से हमें करना है सॉल्व। ठीक है, आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, लॉन्ग लेंथ के ट्रेन्स, बोट्स एंड स्पीड्स, एस्केलेटर्स, 5 टॉपिक्स वी डिड, एंड उसमें भी सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, मल्टीपल टाइम्स मीटिंग वाला किया हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में, सर्कुलर मोशन में स्टार्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, वी डिड मल्टीपल पीपल मीटिंग ईच अदर, ऐसे सिनेरियोस, एंड बोट्स एंड एस्केलेटर्स थोड़ा अलग था। ठीक है, और ट्रेन वाले में तो बिफोर आफ्टर का इमेज ड्रॉ करके डिस्टेंस पता चलता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज।